I didn't realize a similar press corps was so large. Wonderful to see so many of you here. I've been campaigning for the party. In fact, the elections in my constituency and in my state were in the second phase, finished on the 26th of April. So since then, I've had the great privilege of traveling around the country and seeing for myself how much the people of India want change. They want change in Delhi. They want an end to being lectured to with insincere speeches that are not followed by any tangible benefits for the ordinary people of India. And what we are seeing everywhere, in every state, North India and South India, is that the Congress Party and the India Gathbandhan have come together to make a real difference in the lives of people. We are reminding people that this election is about you. It is about your welfare. It is about whether in the course of the last 10 years, you and your family have benefited in any way from decisions of the government. Whether the promises to create 2 crore jobs a year, which have not been fulfilled, have in any way given you and members of your family new or better employment. If you're from the farming community, a Prime Minister who promised to double farmers' income and has completely failed to do so. Again, we're asking you, does this Prime Minister deserve yet another chance? We are asking those young people, college graduates, who discover that if you come out of college with a university degree, that there is 42% unemployment for recent graduates. That is something which is driving so many of our young Indians out of the country. So I say to all of you, if you want social justice, the Congress Party and the India Alliance are for you. And what is more, we in the Congress Party have come up with a very specific set of justice proposals. 5 न्याय, महिला न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय. हम चाहते हैं कि सब जन को हमारे देश में न्याय के साथ जीना, डिग्निटी के साथ जीना उनका हक है और हम ये देने के लिए तैयार हैं. I hope you've seen our campaign literature. I was a member of the manifesto committee. We have done some serious work on what the country needs to see happening. And we have also committed to undoing some of the damage that this government has done, repealing a number of anti-people laws and creating an environment in which business can flourish and at the same time the revenues coming to government from business can be given to the poor, the marginalized, the disenfranchised, the excluded. We believe in inclusive India. We believe economic growth should be for everybody. And we do not believe in discriminating on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of region, on the basis of language. If you are Indian, you're an Indian citizen, you have the same rights as every other Indian citizen, and the Congress Party and the India Alliance will stand up for your rights. You in the media know very well what has happened to your freedom of expression. We will pledge to restore that freedom, reduce the interference by the government with your owners, with your editors that have compromised your ability to do your work. We want once again to create an India where, in the words, the immortal words of Rabindranath Tagore, a great Gurudev, an India where the mind is without fear and the head is held high. That is not the India that most of us are living in today. We are seeing fear everywhere. We are seeing heads down everywhere. We want to change that and give us once again the India that our freedom fighters fought for. So I'll stop there. I'll be happy to take your questions in English or in Hindi. जरूर हिंदी में भी पूछिए या अंग्रेजी में पूछिए, मलयालम में पूछ सकते हैं, लेकिन unfortunately people are more comfortable in Hindi. I know, मजाक कर रहा था. आप हिंदी में पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ. धन्यवाद. हम बहुत आगे हैं जी. आप देखिए,
भाजपा को वैसे भी काफ़ी कठिन स्थिति थी, क्योंकि 2019 में सारे राज्यों में जहां वो मजबूत थे वहां मैक्स आउट कर दिया। आपको याद है 6 राज्यों में उनको सारे सीट मिल गए, 3 राज्यों में 1 सीट छोड़ के बाकी सब मिल गए, 2 राज्यों में 2 सीट छोड़ के बाकी सब मिल गए। ये 11 सीट में उनका एक ही रास्ता है, डाउन, नीचे जा रहे हैं हर जगह में। अब देखिए हरियाणा में कुछ नहीं मिला हमें, इस बार हमें कम से कम 5 से 7 सीट मिल रहे हैं। राजस्थान में भी कुछ नहीं मिला, अब लोग कह रहे हैं कि 10-12 सीट तक राजस्थान में हम जीत सकेंगे, शायद उससे भी ज्यादा, क्या किसको पता। एक राज्य, कर्नाटक में हमें सिर्फ 1 सीट मिला था और अभी कह रहे हैं कि कर्नाटक में 15 से 17 सीट जीत सकते हैं हमारे गठबंधन। तेलंगाना में हमें मेरे ख्याल में 3 सीट है, अभी लोग कह रहे हैं कि 10 से 12 हो सकता है। तो कांग्रेस बढ़ते जा रहे हैं और भाजपा नीचे जा रहे हैं। इसके साथ हमारे एलाइज जो हैं, हमारे सहयोगी पार्टी जो हैं, बिहार में आप देखिए कितना शानदार प्रदर्शन हमने देखे हैं आरजेडी तेजस्वी यादव जी की पार्टी से। महाराष्ट्र में देखिए हमारे सहयोगी बढ़े, मतलब उनके आंकड़े बढ़ गए हैं और जो आधा में काट के भाजपा के साथ चले गए थे, उन पार्टियों को सीट मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आप पूरे भारत में देखिए, हर इलाके में देखिए, सरकार बदलने का इशारा ही मिल रहा है। That's right. There are many that we opposed when they were introduced in Parliament in the first place. For example, the amendment to the UAPA. The UAPA was a law the UPA had brought in, but they have amended it in such a way that the government can declare anybody to be a suspected terrorist, can jail him or her, and does not need to produce him before a court. There is no question of bail, and there is no need even to charge the person. Now, under this unfortunate amendment, which we opposed when it was brought in, we've had journalists stuck in jail for 2-3 years for trying to do their job. We've had student protesters stuck in jail for 2-3 years. We are seeing the weaponizing of a law that is actually hurting innocent Indian citizens with no legal chance to prove their innocence. We believe this is absolutely wrong. Similarly, we don't believe that religion has any place in citizenship. As far as we are concerned, the Citizenship Amendment giving fast-track citizenship to refugees from neighboring countries is fine, but there should have been no reference to religion. And we would repeal or amend the references to religion in order to make sure that any person deserving in the categories covered by the law is considered without reference to their religion. Because in the Constitution that Dr. Ambedkar gave us, it says very clearly that your religion is irrelevant. In this country, every citizen has complete freedom of worship. And that is an important principle we must uphold. These are just 2 examples. I think by the time we get through the list, there will be about another 25 of them. But the idea is we want to preserve the constitutional integrity of the country by ensuring that many provisions of these anti-people laws that abridge the rights and freedoms of Indian citizens are removed so our rights and freedoms are back. I am not saying that somebody who does something bad should not be punished, but they should get a chance to defend themselves, they should have a chance to demand bail, argue before a judge, they should get a chance at the same time to be able to be heard. How can you be in jail for 3 years without knowing what the charges are against you? That's just one example. कहाँ देखे आपने ये? देखिए, कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, लेकिन अब तक हमें जो कुछ हम पूरे देश में देखे हैं, आरएसएस की अपनी ही पार्टी है, वो आजकल देश चला रहा है। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आरएसएस हमें समर्थन दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कई इलाके में कि भाजपा आरएसएस की नज़दीकियाँ शायद इतनी ज़्यादा नज़दीक नहीं थी, करीब नहीं है वो लोग, लेकिन वो आप उनसे पूछिए दोनों तरफ से कि क्या हो रहा है, हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन हम तो ना मांगा ना मिला उनके समर्थन। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण मुस्लिम कम्युनिटी को देना चाह रही कांग्रेस। आज भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है
ये कहाँ देखा? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मैं भी मैं भी पढ़े लिखे हूँ, मैं तो मैनिफेस्टो कमेटी का अंग था। हमने ये न्याय पत्र जो हमने पब्लिश किया है, ये है हमारे मैनिफेस्टो। उसमें बताइए कहाँ, कौन से पेज में, कौन से पैराग्राफ में ये लिखा है कि हम ऐसे करने का इरादा है? ये मोदी जी का ये बात है कि उनके मैनिफेस्टो तो कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, कोई उनके मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा हमारे मैनिफेस्टो पे है, क्योंकि हम जनता के आवश्यकता समझ के हमने मैनिफेस्टो लिखा है। बेरोजगारी के खिलाफ हमने क्या क्या लिखे हैं, हमने कैसे करेंगे पहले नौकरी पक्की, हम कैसे लेके आएंगे लोगों को इस देश में जीने का हक, ये सब अपना मोदी जी कुछ नहीं कहते। लेकिन जो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है, जो कोई सोचा भी नहीं, और मैं कह सकता हूं मैं कोई मीटिंग को मिस नहीं किया, इस विषय पे चर्चा भी नहीं हुई है मैनिफेस्टो कमेटी में, इसको लेके कह रहे कि यह है कांग्रेस पार्टी का इरादा। और एक और चीज आप याद रखिएगा, आरक्षण दो किस्म के होते हैं हमारे देश में, केंद्र आरक्षण है और राज्यों का आरक्षण। हर प्रदेश में अपने अपने यथार्थ हो सकता है। तो अगर 2-3 राज्यों में सिर्फ उनके राज्य में ओबीसी रिजर्वेशंस के भीतर कुछ मुस्लिम कास्ट को भी मिले हैं, वो तो उस प्रदेशों की रियलिटी है, वो सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश नहीं है भाई। कर्नाटक में जब था भाजपा भी पावर में थे, डीएमके है तमिलनाडु में, केरला में कम्युनिस्ट भी रहे हैं, लेकिन जो भी है इस प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस किए हैं, जो भी है, अंत में अभी आपको पता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक स्टैंड लिया इस विषय पे कि मुख्यमंत्री अभी जा रही है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर अदालत के सामने इस विषय है तो कोई कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक अदालत ने कहा कि ये होगा या नहीं होगा। लेकिन जो इस देश में अब तक हुआ है, इसके बेसिस में प्रधानमंत्री ये कैसे करने लगा ये मालूम नहीं है। हमारे मैनिफेस्टो में ये नहीं है। जरूर साहब, मेरा सवाल ये है कि अक्सर चुनाव के वक्त ये चलता है कि आरक्षण की बात होती है, आप तो खुद यूएन में रहे हैं, क्या ये इंडियन पॉलिटिक्स सही है? ये देखिए अच्छा नहीं है। मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूं इसके बारे में। मुझे बहुत बुरा लगा, एक भारतीय नागरिक के रूप में हम प्रधानमंत्री जी का स्थान हम इज्जत करते हैं, इतने महान महान व्यक्तियां प्रधानमंत्री रहे हैं, हम कभी भी अपेक्षा नहीं की कि इस किस्म के स्थान से, इस प्रधानमंत्री के पद से हम इस किस्म के लफ्ज, इस किस्म के शब्द सुन सकें उनके मुंह से। ये बहुत बुरा लगा। अब मैं प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से मांग रहा हूं कि प्लीज इस किस्म की बातें मत कीजिएगा, डिसेंट है। आपकी पोजीशन, आपके स्थान का गरिमा और उनकी मर्यादा जरा प्लीज आप सुरक्षित रखिएगा, इस किस्म की बातें मत कीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस किस्म की बात वैसे भी क्या कर रहा है, हमारे देश को बांटना चाहते हैं आप। क्या प्रधानमंत्री पूरा देश का प्रधानमंत्री नहीं है? सारे भारतवासी का प्रधानमंत्री नहीं है? 20 करोड़ लोगों को आप अलग करना चाहते हैं इस किस्म की बातों के साथ। तीसरी बात, चुनाव में हमारे मन पे क्या है, 2014 से 24 तक जो कुछ हुआ और 24 के बाद क्या होने वाला है, ये है हमारे चिंता। लेकिन प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, आप औरंगजेब के बारे में सुनेंगे, आप 1984 के बारे में सुनेंगे, आप बहुत बहुत दूर ऐतिहासिक विषय पे, मैं ये किया होता अगर मैं होता 1971 में, इस किस्म की बात मैं समझ नहीं पाता हूं। आप भविष्य के बारे में पूछिए, आप कल क्या करेंगे हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए, वो 2047 के अमृतकाल के बारे में बोलना चाहते हैं। तो इस किस्म की राजनीति कैसे चलेंगे? अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आप लोगों को आपकी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, आप क्या किए हैं उनके लिए 10 साल से, और रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बाद आप जनता से मार्क मांगिए, यह है आपकी जिम्मेदारी। और जनता की भलाई है सरकार की जिम्मेदारी। मंदिर बनाना, प्राण प्रतिष्ठा करना सब अच्छे हैं, उनके लिए उसका जगह है, लेकिन सरकार का प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी जनता की भलाई। और उसमें क्या किया है मोदी जी, प्लीज समझाइए। या Prime Minister, he has succeeded in running sort of presidential form of election, president form of election. So much so that people don't even bother who they are candidating, and they just vote for both. So is it a failure on the part of Congress and the opposition to give him such a platter like
We have not given him the platter, sir. The problem in our situation is this. We are seeing a parliamentary system being run presidentially. And that is because his party has been complicit in the creation of a personality cult that has never been seen in this country before. You get a vaccination for COVID, you get his picture on the certificate, not yours. You go abroad where people say, this is not your photograph. You say, no sir, it's our Prime Minister's photograph. They start laughing. But that's what's happening. You go and get ration in a village, the bag comes with Mr. Modi's photograph. You go to a railway station, you see a kiosk saying, take selfie with Modi. What is happening to our country? This is only in North Korea that such things used to happen. But that is what is going on. And as a result, everything becomes about the supreme leader. You sit in parliament, you ask a minister a question about some program. He will begin by saying, under the wise leadership of Prime Minister Narendra Modi, I have done this. But kya? We are asking a minister to be accountable for his ministry to parliament to which he is accountable. Where does the Prime Minister come in? But in the BJP, that's the way the system is running. So the question I'm asking you is that normal? Is that natural? Is that how it should be? Is it how it's ever been in 70 years of Indian democracy? The answer bluntly is no. And we have had, we just sadly, yesterday marked the 60th anniversary of the passing of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was a man who not only did not encourage a personality cult, he came to Parliament every day that Parliament was in session. He encouraged the opposition to speak and gave them importance out of all proportion to their numbers. Even his own party backbenchers had the freedom to criticize him, the Prime Minister. Do you remember that famous debate in 1962 about Aksai Chin in China, when he said not a blade of grass grows there? And a Congress party MP from Delhi stood up and pointed at his own bald head and said, sir, not a hair grows on my head, you want to give this to China too? This is a Congress party MP talking to his Prime Minister. This was the kind of democracy we had. Okay, and now we are seeing a Prime Minister that no one dares to speak to or about to his face in his own party. So let's please understand that it is not the opposition of the Congress party that has empowered or enabled this presidentialization of the Prime Ministership. It is the BJP that has been complicit in allowing this to happen. I might add, however, that we have, as a result of this, the worst of both worlds. We don't have any of the advantages of a presidential system. One of the major advantages of the presidential system is the president does not control the legislature. And the legislature is an independent body that can hold the president accountable, that can ratify his appointments, that can challenge him, that can approve his budgets, and so on. We don't have that. Instead, we have a BJP majority from which both the president emerges and the parliamentary majority exists, and they'll pass anything he wants them to. Any budget, any law that the cabinet puts forward through in the parliament. Nobody in the BJP has ever challenged the law in the house, or the floor of the house, or suggested anything, even suggested an improvement. Nothing at all. So the result we are seeing is that the parliament has become a notice board for the Prime Minister's announcements and a rubber stamp for his decisions and his laws. That is not the way the parliamentary system is supposed to work. If we bring the India alliance to power, it will be a coalition government, and in the coalition government, the Prime Minister will be a first among equals. The ministers will have their own authority and their own rights. That's going to be the strength of the parliamentary system in action. And let me finally also add, in the last 25 years, we've seen how successful coalition governments can be. The best period of economic growth in Indian history was from 91 to 2011, and in those 20 years, we never had a majority government. So that's the situation we're talking about. We see nothing wrong in offering a good coalition government made up of many parties that can bring positive change and democracy back to India. But sir, that's precisely the problem. We shouldn't be asking that question in a parliamentary system. In a presidential system, it's a choice of individuals. In a parliamentary system, the only people who can vote for Mr. Modi are the voters of Varanasi. Nobody else. Mr. Modi is accountable to his party first and foremost, and through his party to parliament. And tomorrow, in principle, he could be replaced by somebody else in the BJP, and that's
That's the way the system is supposed to work. In fact, I think Mr. Kejriwal pointed out that we don't even know whether the retirement age of 75 they impose on all BJP ministers might not apply to him too. So how do we know? You say you're voting for Mr. Modi. Mr. Modi has basically got 1 year and 3 months left before he turns 75. We are talking about 26 parties coming together in the India Alliance. After we have won the election on the 4th or 5th of June, they will decide amongst themselves who should be the leader. Did you realize in 2004 that you were voting for Dr. Manmohan Singh? But he came, he gave the country exemplary leadership. He was an outstanding world statesman and prime minister for 10 years, emerging from a coalition process. So don't worry, we will be able to give you the same results, same quality of results this time also. चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर हाँ, कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए हमारी चिंता तो हम बता दिए इलेक्शन कमीशन को, और आपको पता है कि जब इलेक्शन कमीशन ये आंकड़े ठीक तरह से नहीं रिलीज किया तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जिनमें से हमारे लोग भी थे। हमें आश्चर्य लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो हर उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट को उसी दिन फॉर्म 17C भर के देते हैं, कि उस फॉर्म्स जब इलेक्शन कमीशन के ऐप में वो लोग कंपाइल करके अगले दिन ही दे सकेंगे देश को, पता नहीं इतने हफ्ते क्यों उस पर बैठे रहे। लेकिन अंत में आपको पता 2-3 दिन पहले अभी इलेक्शन कमीशन इसको भी रिलीज किया है, तो वो अच्छी बात है। ईवीएम्स के बारे में हम नहीं चाहते हैं कि ईवीएम्स को डरा के लोग वोट नहीं करें। ये हमारी लोकतांत्रिक हक है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है, जाके वोट करनी चाहिए। अगर अंत में लगा कि कुछ अजीब सी चीज़ें चल रही हैं तो कांग्रेस पार्टी इस विषय को उस वक्त देखेंगे। लेकिन हम सबसे कह रहे हैं कि आप जाइए, वोट कीजिए। अच्छे अच्छे चुनाव चले हैं हमारे देश में ईवीएम्स के साथ, और मेरे ख्याल में जो जनता चाहती है, द पीपल्स विल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अ मशीन। तो मैं आप लोग से कहता हूँ, इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा है कि अगर कोई शक हो कोई भी सिचुएशन में, तो ये जो नया सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं ना लास्ट स्टेज में, वो सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं कैंडिडेट्स नेम्स और फोटोज़ अपलोड करने के लिए। तो उस वक्त अगर कुछ गड़बड़ हो गए हैं, आपको ये सॉफ्टवेयर 45 दिन तक रखा जाएगा रिजल्ट्स के बाद, और नंबर 2 कैंडिडेट को पूरा हक है कि पैसे देके अपने ही खर्च में उसको एनालाइज कर सके। तो अगर ऐसे कोई शक है, हम ये शक को हम डिस्पेल कर सकेंगे इस किस्म से। लेकिन मैं लोग से कहता हूँ, प्लीज डोंट वरी so much about the EVMs that you don't cast your vote. You must cast your vote. You must vote and exercise your democratic freedoms in this country. ये बड़ी जरूरी है। Little louder, ma'am. I can't hear you. कोई ओल्ड पेंशन स्कीम, आप खड़े होकर जोर से हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम, जी बताइए। बेनिफिशियल हाँ, पेंशन देखिए जो आप बेनिफिशियरीज तो वही है जिनके पास पेंशन काफी मिल रहे थे। नहीं, देखिए न्यू पेंशन स्कीम एक डेट से शुरू हो गया, और हमने कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस जाएंगे ना, यही बात है। जी हिमाचल में दे रहे हैं। हाँ, हिमाचल में तो हम वापस ओल्ड पेंशन स्कीम ही दे रहे हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम में नेचुरली पीपल के बेनिफिट्स जरा सा बेहतर है। ये मैं भी समझा। आपका प्रश्न पूरा सुन नहीं सकता। नहीं, देखिए एनपीएस सरकार के लिए बेहतर है और ओपीएस पेंशनर्स के लिए बेहतर है, यही सही है, क्योंकि सरकार अपने अकाउंट्स बैलेंस करने के लिए सब कोशिश करते होंगे। यही कारण है उनका वो अग्निवीर ले आने के लिए। मुझे अजीब सा लगा कि जब भारत के आर्मी, पूरा दुनिया भर जाना जाता है कि ये प्रोफेशनल आर्मी है, कि इस आर्मी को आप खराब करके लोगों को 6 महीने ट्रेनिंग देके उनको जवान बनाते हैं और 3-4 साल के बाद उनको छोड़ भी देते हैं। ये बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस, एक्सेप्ट कि सरकार अपने खाते के बारे में सोच रहे हैं। हाउ कैन वी एडजस्ट आवर अकाउंट बुक्स एंड सेव सम मनी ऑन फ्यूचर पेंशन्स। ये नहीं चाहिए। ऐसे चीज़ें हैं हमारे देश में जिस पे सरकार को खर्च करने की ज़रूरत है।
पेंशन्स है और हमारे आर्मी की प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल सर्विस उनमें से भी एक बड़ी चीज़ है। Thank you, sir. I think this is enough. Now I request you all to kindly have IT. और इसके बाद मैं आप सभी से निवेदन भी करूँगा 4 बजे से प्रिपरेशन में जो है हमारा